चीज़ शुरू कहाँ से हुई? यूके में एक शेख होते हैं, शेख मुमताजुल हक। मैं कुछ चीज़ें ब्राउज कर रहा था तो अचानक मुझे वो एक वीडियो मिली जिसको लिखा हुआ एक्सपोज उलमा। मैं कही कौन है? लिखा हुआ आगे से अहमदी मुस्लिम्स और जमात अहमदी, ये सारे टाइटल्स जो आते हैं हैशटैग्स। फिर मैंने देखा शेख अहमद दीदार रहमतुल्लाह के बारे में लिखा हुआ है कि दीदार रिफ्यूटेड। कौन है ये शख्स? तो मैंने देखा तो एक छोटा सा, एक मुन्ना सा बच्चा है, वो सबको जवाब दे रहा है। और जवाब किस तरह दे रहा है? काट काट के, हर एक की वीडियो काट के, फिर काट के, फिर काट के, फिर काट के। अच्छा, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि वट चढ़ जाना। मुझे चढ़ गया वट, वो ईमान जो था मेरे अंदर वो जागा। मैं कहा ये क्या है? दिस मस्ट बी स्टॉप्ड। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद साल पहले मेरी एक गुफ्तगू थी मौलवी इनामुल्लाह मुमताज़ के साथ, लेकिन जब दिन आया तो उसने राह फरार इख्तियार कर लिया। चंद दिन पहले उन्होंने एक नया फतवा यूट्यूब पे डाला है जो मैं चाहता था कि नाजरीन भी सुने, और वो ये है कि अहमदी मुसलमानों से बात करना भी हराम है, उनके साथ मुनाजरे जायज़ नहीं हैं। इसकी वजह वाज़े है कि वो जानते हैं कि कुरान और हदीस से वो जमात इस्लाम अहमदिया को कोई जवाब नहीं दे सकते। I'm really not happy with the Muslims, when they debate them. Wallah Azim, you are not doing right thing. You shouldn't be debating these people. You should not be debating these people. It's haram to debate. You should not be debating these people. It's haram to debate. Anyone who says that Prophet Muhammad is not the last prophet and making ta'wil, making explanatory arguments to listen is haram. Razi, if you want to discuss it, come and show us what you made of, but not tackle people like brother Adnan Rashid when he's not prepared and he's in a masjid and he just asked for 30 minutes, 25 minutes, and then you go on for 25 bombarding. This is Bukhari, this is Quran, this is Bukhari, but not tackle people like brother Adnan Rashid when he's not prepared, and he's in a masjid. Don't you brothers and sisters think for 1 second, wallahi, thumma wa, may Allah protect the Sheikh. Don't you think for 1 second that the Sheikh is, weak in his argumentation or anything close to that. The Sheikh knows what he's doing, and wallahi, I can't emphasize this so much. Me personally. Now some people they were not happy that I spoke to them. Came in like shovels and walked into Speaker's Corner, talking to a bunch of Arab brothers who don't know the Urdu language, They haven't read Mirza's books in the Urdu language like I myself and Ijaz Bhai have. In order to understand the view of someone on something, you have to read them thoroughly. I am an academic, I am a historian. Okay? So I am not one of those people. I have studied very carefully. Okay? These are the reasons why we reject Mirza. So which books and his have you read cover to cover? Have you read any cover to cover? I will never read them. Okay. I have studied very carefully. Okay, we have read Mirza's works in the Urdu language, right? Imtiaz Bhai more than I have. Sheikh, you alright? Alhamdulillah, arguing for the sake of arguing. Yeah, I know. Unfortunately. Anyway, very nice to have you on the panel. Thanks very much. If you came earlier at the beginning, we had some Qadianis here. Your favorite topic. Remember, they have destroyed me. That's it. I'm gone. I'm done. I don't know if they're coming this Sunday, but let's see. I think no, probably he's going back. He has gone back. Yeah.
Yeah, but look at the audacity, coming unannounced, coming prepared with the subject in advance. To not that we have a problem that they come prepared, but it just shows the deceitful nature that you prepare behind closed doors and then come and pretend that you want to debate when you want to debate. I've seen the clip with you in we want to debate you. We want to debate. He did not even agree that yes, we'll have it here. He said, I am telling you that when anybody, I personally, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, I personally I believe 2 days ago, I said, Adnan bhai, sometime I said I know because I have spoken to you, but sometime the selection of words can give this impression that as though as you are saying something different to what we believe. Thank you so much. I wish you had come earlier and we could have a fruitful discussion. We made a big mistake, a huge mistake. We raise our hands to that we let in wrong people who one cannot have a decent conversation with them. We made a big mistake, a huge mistake. We raise our hands to that we let in wrong people who one cannot have a decent conversation with, a straight conversation where they're trying to manipulate things, twist things, deliberately mistranslate things, hide information, and when they are probed, when they are confronted, they don't give straight answers. So we made a big mistake. It was actually for the Ahmadi Awam, the masses, people like yourself, people who are not part of this missionary consultancy, right? But inshallah, we can do another one in the future and make sure that we don't let these missionaries in. Inshallah, we can do another one in the future and make sure that we don't let these missionaries in. I had a debate, which is on my channel, very recently with Razi, the Qadiani Murabbi. And this debate took place about a couple of days ago in Canada, in Milton. And I was honored to be there. And I'm very thankful that Razi came with his team. And we had a conversation for nearly 4 hours, about 3.5 hours. We discussed at least 4 topics, if not more. And the debate is there online on my channel. You can watch it. So there are many points that we would like to highlight from that debate as well in tonight's stream. So you can say it is like a post-debate analysis. What we have done is we have tried to, with the best of our ability, because sometimes they were talking over each other. So we tried to combine everything when Razi was speaking in all of these segments. Because what Adnan bhai has to say, alhamdulillah, and we believe that it was very clear to answer everything Razi was saying, and inshallah people have already watched that. But now we want to, maybe if there were anything which was not addressed, maybe because of shortage of the time, obviously as we all know, when we have the discussion, there may be like 10 points. You can't discuss or address all the 10. So inshallah we will. उसमें उन्होंने दिखाया जिस तरह कादियानियों ने इनके चैलेंज का जवाब दिया। इन्होंने चैलेंज किया था हमारे अकीदे सब के एक जैसे हैं खत्मे नबूवत पे। उस कादियानी ने क्या किया, उसने सारे बड़े बड़े उलमा को फोन किए, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग चला दी है और इनके मुंह पे कालक मल दी है। तो देखें अल्लाह ने जलील कर दिया इनको, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने 3 महीने का टाइम दिया था कादियानियों को, अगलों ने 3 दिन के अंदर सारे मौलवियों की वीडियोस रिकॉर्ड करवा के चढ़ा दी है कि ये लो जो तुम झूठ बोल रहे थे। अब मुझे बताओ इन लोगों का कोई लेवल है कि ये डिबेट करेंगे कादियानियों से? मेरा तो दावा है कि इनके बड़े जिनका ये दिफा कर रहे हैं वो भी कब्रों से निकले, कादियानियों का मुकाबला नहीं कर सकते। कि इतना हौसला इनमें होना ही नहीं, क्योंकि इन्होंने उन्हीं मौलवियों के पास दोबारा दर्स देने जाना है। इनको लितर मारेंगे अगर इन्होंने थानवी रसूलुल्लाह का और चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा ना किया, तो लितर पड़ेंगे। इसलिए ये बेचारे उन मौलवियों का भी मुंह रखते हैं, उधर कादियानियों से डिबेट भी करते हैं, इधर से वो सीधा इनके मुंह पे बुलशिट कर देते हैं। आजकल नेट पे मैं देख रहा हूं कि कादियानियों के साथ एक कोई मुसलमानों के स्पीकर हैं, अदनान रशीद गालिबन उनका नाम है, छोटी छोटी दाढ़ी रखी हुई है, मैं तो उन्हें नहीं जानता, लेकिन वो मुझे अभी ताज़ा ही तारुफ हुआ उनके बारे में। तो अब उनके गले की वो हड्डी बनी हुई है, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिवली रसूलुल्लाह, अब कलबाजियां खा रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं कि ये हम कलमाते कुफ्र मानते हैं, लेकिन अगर कोई बोलेगा तो फिर हम उससे पूछेंगे कि वो किस नीयत से कह रहा है। वो कादियानी उन्हें जो है वो फिर पकड़ रहे हैं इस बात के ऊपर। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जाके ये कादियानियों से जलील होते हैं। शौक बहुत है मुनाजरे करने का इन लोगों को।
لیکن ذلت کاٹ کے آ جاتے ہیں. پھر تیاری کر کے جاؤ اور اعلان برات کرو ان سب لوگوں سے, ادروائز تم لوگ اسی طریقے سے ذلیل ہوگے اور ہم تمہاری ذلت کا تماشا دیکھتے رہیں گے اور افسوس کرتے رہیں گے. دکھ ہوتا ہے ہمیں, سیدھی سی بات. پھر دیکھیں دوسری ذلت انہوں نے کیا کمائی ہے. وہی جو ان کے ساتھ ایک مولانا صاحب ہے لمبی داڑھی والے, پتہ نہیں ان کا کیا نام ہے, ان کو تو میں ان کو بھی نہیں جانتا, محمد تو ہاں یہی غالباً اسی طرح کا نام ہے. شاید انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جی احمد بریلوی اور قاسم نوتوی کا ایک ہی عقیدہ ہے ختم نبوت کا. یار کیوں جھوٹ بولتے ہو, تمہیں نہیں پتا. پھر بڑے فخر سے اس نے چیلنج دیا قادیانی کو کہ 3 مہینے کا ٹائم ہے. 3 مہینے کا 3 منٹ میں انہوں نے ان کی طبیعت صاف کر دی ہے. انہوں نے پکڑ کے ہر بڑے بڑے اہل حدیث عالم کو فون کیا, ان کی آڈیو ریکارڈ کی ہے, ان کے منہ پہ قیامت تک کے لیے بل شٹ کر دی ہے. آپ یہ اپنے منہ سے اپنی گندگی بھی نہیں صاف کر سکتے. تو میرا جو دعویٰ ہے نا کہ تمہاری کمپیٹنسی نہیں بات کرنے کی, کیوں کرتے ہو بات؟ اتنا بڑا تم نے دعویٰ کیا. اب اعلانیہ اگر یہ مولانا اور یہ عدنان رشید یہ معافی نہیں مانگتے اپنے اس کلیم کے اوپر تو یہ مناظرہ ہار چکے ہیں, اور اگر یہ معافی مانگ لیتے ہیں تو ابھی ذلیل ہو گئے ہیں بقول میرے, کیونکہ میں تو پہلے ہی بتا رہا تھا کہ تمہاری کمپیٹنسی نہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان بزرگوں کے کیا عقیدے ہیں. تو دیکھیں توصیف راشدی صاحب نے, ان کے فرقے کے ایک اور مولوی نے, بریلویوں کے علماء نے, سب نے کہا کہ جی یہ جو عقیدہ تم بتا رہے ہو تحذیر الناس کا, یہ کفر ہے ہمارے نزدیک. اور ایون ان مولویوں نے یہ بھی کہا, ان کے اپنے فرقے کے مولویوں نے, کہ ان بندوں کو سننا ہی حرام ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی کہا ہے. توصیف راشدی صاحب نے یہ کہا کہ اس کو سننا حرام ہے, حالانکہ وہ مولانا مجھے لگ رہا ہے شاید دیوبندی ہے یا ان کے فرقے کا ہے. اس نے کہا اس کو سننا بھی حرام ہے کیونکہ اس نے احمد بریلوی کو رحمہ اللہ کہا ہے.